So there are so many different types of plant species present on Earth, and many of these plant species are known to accumulate, to transform, to degrade so many different toxic compounds. And the plants can grow on land, but there are certain plants which can grow in marshy areas, in submerged conditions as well. So here we will talk about those plants. So there are so many different aquatic plants which can be used for this purpose. Depends on the type of contaminant and type of the site. We can pick and choose the plants accordingly. And the biological mechanisms that operate during this process of phytoremediation by using aquatic plants, those are almost similar to the processes that are operated by the plants that are grown on land. Now there are a number of ways by which we can categorize these plants and these treatment systems. The two major groups could be, one is based on the algae, the other one is based on the other macrophytes. The macrophytes are the plants which can grow in aquatic environment. Those plants can be emergent plants, means they are above the water level, or those can be submerged, that is they are below the water level, or those can be floating as well, means they float at the water air interface. Now as we discussed in our early lectures, that there are so many different ways by which the environmental problems, the pollution and the contaminants can be remediated. Physical and chemical ways are there. However, the more concern nowadays is to use biological means of remediation. Why so? Because when we use biological means for remediation of some contaminant, there is no harm to the environment, and there are no such toxic byproducts which are produced in the process. Same goes here, that our resurgence is there that we should use plants phytoremediation either on land or in aquatic environments as well, for the treatment, for the remediation of certain toxicants. So that's why these days it is much in talk. So how can we characterize, how can we identify these systems? What are the major properties of such systems? Basically, it's kind of a pond. The pond can be artificial or natural. अगर pond नेचुरल है तो उसमें नेचुरल प्लांटेशन ऑलरेडी वहाँ मौजूद है. हम उस नेचुरल पॉन्ड में अपना जो भी हमारा इफ्लुएंट है वो इंट्रोड्यूस करते हैं इन अ स्लो फ्लो रेट, और जो ही वो प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, प्लांट्स उसको अकोमोलेट कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, बायो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. और ये आर्टिफिशियल पॉन्ड भी हो सकता है कि आर्टिफिशियली खुद साख्ता बनाया हुआ है और उसमें प्लांटेशन की जा सकती है. एंड इन डूइंग सो वी कैन प्लांट आवर ओन चॉइस ऑफ प्लांट्स. On the other hand, other one could be that we have a soil which is artificially constructed land, and we have some permeable layer below the soil so that the leaching effect is not there. So उस तरह का हम कुछ containment type बना सकते हैं, उसमें हम सारे plants वहाँ grow करा सकते हैं, and both methods are there. And in both the cases, we will plant the macrophytes there. Aquatic conditions will prevail, and then we will introduce the effluent which needs to be treated. Now, when we introduce the effluent, we try to introduce it in a very slow fashion with a slow flow rate, so that it gets ample time to come in contact with the plants. Moreover, there are not just plants growing over there, there are so many other microbes growing there as well, both in the water and in the sediment, also in the rhizosphere of the plant's roots. So those also act on this slow flowing effluent, and they start degrading and biotransforming the toxicants present in the effluent. So once we have passed the effluent through this plantation, then after a certain period of time we can remove the plants from there, and thus indirectly we are removing the toxicant from there. Now, the relatively long retention period allows adequate time for the process of settlement, contaminant uptake, biodegradation, and phytotransformation. All these processes are happening in the macrophyte treatment systems. Now, जैसा हमने पहले कहा था कि जो treatment systems हैं, जो processes हैं, वो identical हैं, काफ़ी हद तक similar है with those that operate in land by phytoremediation. The plants could be submerged, floating, or emergent.
And when we talk about aquatic systems, the treatments could be natural wetland, a constructed monoculture, or polyculture. Monoculture means that we have planted only one type of plants, and polyculture means that we have planted different types of macrophytes. Now, in addition to the processes operated by the plants and the microbes, there are certain biotic and abiotic factors operating there as well, and they also contribute in the degradation and biotransformation of the contaminant. Now, obviously, the main biological mechanisms are, of course, accumulation and transformation. There are so many other processes happening as well. Those can happen at the interfaces of water and sediment and the root, or the plant body and the water. So all these things are in contact with each other, and they help each other to transfer different types of molecules and to degrade one type of molecule into another type. Now, the primary processes which operate in such systems both by plants and microbes, those are first of all uptake and transformation. कि प्लांट अपटेक करता है किसी भी कंटेमिनेट को और फिर वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है फ्रॉम टॉक्सिक स्टेट टू अ लेस टॉक्सिक स्टेट. Subsequent biodegradation and biotransformation. Once it has been uptaken by the plant, it can be degraded or can be biotransformed. Absorption is there as well as adsorption. हमने पहले भी जिक्र किया था. Absorption है कि उसको अपटेक कर लेता है. Adsorption का मतलब है कि उसकी surface पे आके वो attach हो गया. Ion exchange mechanism are there as well. Filtration is there as well. Chemical precipitation is there as well. कि बहुत सारे compounds ऐसे हैं, बहुत सारे contaminants ऐसे हैं जिनको plants अपने different metabolites की वजह से precipitate कर सकता है. सेटलमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स. बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे जो कि टॉक्सिक होंगे एफ्लुएंट में. दोज कैन बी सेटल डाउन इन द सेडिमेंट, एंड ऑफ कोर्स केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर एज वेल. सो ऑल दीज प्रोसेसेस ऑपरेट इन मैक्रोफाइट ट्रीटमेंट सिस्टम्स. नाउ व्हेन वी इंजीनियर सच सिस्टम्स, अगर हम नेचुरल सिस्टम यूज़ ना करें, हम खुद से बनाना चाह रहे हैं, दैन वी ट्राई टू इंक्रीज़ द डेंसिटी ऑफ द प्लांटेशन ओवर देयर. हम चाहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगाएं ताकि एफिशिएंसी सिस्टम की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए. नाउ मच ऑफ द बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट abatement potential of the system exists through the synergistic activity of the entire community. वहाँ पे सिर्फ प्लांट्स ही नहीं हैं, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं, बहुत सारे प्रोटोजोन्स भी हैं और बहुत सारे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी हैं. सो ऑल दीज collectively make a community which work together to achieve a much high level of bioremediation. So हमने पहले भी बात की कि इसमें इस प्रोसेस में क्योंकि इसमें सिर्फ प्लांट नहीं है, उसकी रूट्स भी हैं, राइजोस्फीयर भी है. सो इसके जो राइजोस्फेरिक प्रोसेसेस हैं जो एक्वाटिक प्लांट्स में चल रहे हैं, दोज आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द राइजोस्फेरिक प्रोसेसेस दैट ऑपरेट बाय द प्लांट्स which are grown on land. In addition, particularly in the case of submerged vegetation, the surface of the plants themselves become a large extra substrate for the attachment of the microorganisms. क्योंकि plants submerged हैं, aquatic system है, तो जो वो बैक्टीरिया जो कि वाटर के अंदर हैं, those are able to attach on the surface of the plants which is submerged in the water. So जो plant surface है वो एक extra surface provide कर रही है, extra substratum provide कर रहा है for the bacteria to attach. So therefore bacterial load increase हो जाता है in the surrounding of the plant, which also contributes to the high efficiency of the bioremediation in these systems. So this combined this combined phenomena leads to a high microbial load around the plant, and this exhibits a high level of bioactivity and therefore high level of bioremediation. Increased localized oxidation is there as well. Why so? प्लांट जो हैं वो जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन. तो प्लांट सबमर्ज है तो वो अपनी सराउंडिंग वाटर में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, रिलीज़ करेगा. मोर ओवर प्लांट्स आल्सो रिलीज सो मैनी एक्सुडेट्स which are important molecules for the growth of so many different types of bacteria. तो प्लांट के इर्द गिर्द ऑक्सीजन लेवल भी ज़्यादा हो गया और डिफरेंट बेनिफिशियल कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है. सो इन द सराउंडिंग ऑफ द प्लांट्स the biomass of the bacteria will be much more high because that is an ideal place for the growth of the bacteria. So वहाँ पे microbial load बहुत ज़्यादा हो जाएगा and that helps the plants to remediate the toxicants in a much efficient manner. So कहा जा सकता है कि फिर प्लांट का एक रोल नहीं है, वो इन सिस्टम्स में मैक्रोफाइट्स जो हैं, मैक्रोफाइट्स प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ एक रोल प्ले नहीं कर रहे,
they are not just involved in the bioremediation of the contaminants, but they are also involved in establishing the ecosystem and in the integrity of the ecosystem as well. So वो indirectly directly दोनों तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं. Moreover, on the roots of the plants, iron plaques can be formed and they can also help to chelate certain metals. And in addition to that, direct adsorption and biochemical reactions are also there which help to remove the metals. Now, the ability of the emergent macrophytes to transfer oxygen to the submerged parts is well established. This enables them to cope with effective waterlogging and functional anoxia. प्लांट चूँकि कुछ हिस्सा सबमर्ज है उनका, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, मैक्रोफाइट्स हैं, कुछ हिस्सा सबमर्ज है वाटर में, कुछ एरियल है, तो दे कैन ट्रांसफ़र द ऑक्सीजन, दे कैन प्रोड्यूस द ऑक्सीजन एंड ट्रांसफ़र इट इन द वाटर. एंड उसमें जो नोक्सिया प्रोड्यूस हो रही थी कंडीशन वाटर में, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी अगर है तो वो ख़त्म हो सकती है. As much as 60% of the oxygen transported to these parts of the plant can pass out into rhizosphere. So ultimately oxygen की जो direction है movement की वो down towards the rhizosphere है इस system में. So due to this, aerobic condition is created around the roots of the plants and around the parts of the plants submerged in the water. So that's why this accounts for a significant increase in the dissolved oxygen level. So हमने पहले भी बात की, इस वजह से ऑक्सीजन लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा. तो चूँकि ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो गया, सो दिस विल लीड टू एरोबिक रिएक्शंस टू ऑपरेट इन दीज सिस्टम्स अराउंड द प्लांट्स. द एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन सोर्सेज इज फैसिलिटेटेड बाय दिस ऑक्सीजन ट्रांसफर एंड इट हैज़ अ मेजर बियरिंग ऑन द रेट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन डिग्रेडेशन. जिससे हमने अपने पुराने लेसन्स में देखा था, पिछले लेसन्स में, कि इवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एरोबिक प्रोसेस हमेशा ज़्यादा बेहतर काम करते हैं. तो यहाँ पे चूँकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट्स, तो एरोबिक एनवायरनमेंट हो जाएगी, तो जो कार्बन डिग्रेडेशन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी. दिस आल्सो मेक्स पॉसिबल द डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड विद इन द रूट जोन. इस ऑक्सीजन की वजह से इन एरोबिक प्रोसेसेस एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से विच आर बीइंग ऑपरेटेड बाय द माइक्रोब्स प्रेजेंट अराउंड द प्लांट्स एंड इन द राइजोस्फीयर ऑफ द प्लांट्स, हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है. सो देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट कैन हैपन when we use macrophyte treatment systems. We will talk more about this system in our next lesson.